So welcome students. So let us look at this question. इस क्वेश्चन में आपको एक इनइक्वालिटी दिया है which is sin cube x cos x is greater than cos cube x sin x, and you are asked to find the solution set of this inequation in the interval 0 to pi, 0 to 180 degrees के बीच में. What are the values of x which satisfy this inequality? So let us look at this question. So sin cube x cos x is greater than cos cube x sin x. So इस तरफ भी sin x cos x है, इस तरफ भी sin x cos x है. So आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते. Let us bring terms onto the same side. So sin cube cos minus cos cube sin is greater than 0. Cos को c लिखा था, sin को s लिख रहा हूं. Okay? So this implies इसमें भी sc है, इसमें भी sc. sc कॉमन लेता हूं. sc that is sin x cos x into sin square minus cos square is greater than 0. This implies sin x cos x into what is sin square minus cos square? आपको पता है cos square minus sin square is cos 2x. So sin square minus cos square is minus cos 2x is greater than 0. पूरा इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. So effective inequality that you get is sin x into cos x into cos 2x is less than 0. So minus से multiply किया तो the sign of inequality has got reversed. So effectively whatever inequality is given in the question has finally simplified to this inequality. ये दोनों inequality same. So आपको solve क्या करना है? sin x into cos x into cos 2x is less than 0. So ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तीनों का प्रोडक्ट जो है कहाँ लेस देन 0. आपको पूरा एनालिसिस करने का जरूरत नहीं, जस्ट नीड टू एनालाइज बिटवीन 0 एंड पाई. सो 0 एंड पाई के बीच में आई विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ वैल्यूज ऑफ sin x cos x एंड cos 2x. सो तीनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट sin x का ग्राफ बिटवीन 0 एंड पाई. 0 एंड पाई के बीच में हमको पता है कि sin x का ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस. So ये pi by 2 है. So between 0 to pi sin x is always positive. ठीक है. फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में sin x is always positive. अब let us look at the graph of cos x. So cos x का ग्राफ कैसा होगा? 0 और pi के बीच में. cos x 1 से स्टार्ट होगा. It starts with 1 and at pi by 2 it becomes 0 and then from pi by 2 to pi it goes to minus 1. इसका मतलब 0 टू पाई बाई 2 के बीच में पॉजिटिव है, पाई बाई 2 टू पाई के बीच में नेगेटिव. माई साइन एक्स इज पॉजिटिव एवरीवेयर. नाउ लेट अस लुक एट द ग्राफ ऑफ cos 2x. सो cos 2x का ग्राफ कैसा आएगा? लेट अस लुक एट दिस हियर. 0 पाई पाई बाई 2. सो हमको पता है कि cos 2x का जो पीरियड है वो पाई हो जाएगा. सो cos x का पीरियड 2 पाई है. Similarly, cos 2x का पीरियड जो है वो पाई हो जाएगा. So how does the graph look like? So 1 से स्टार्ट होगा. पाई बाई 4 में 0 बन जाएगा because when x is equal to पाई बाई 4, cos 2x is cos पाई बाई 2 which is 0. So पाई बाई 4 में cos 2x will become 0 and when x is equal to पाई बाई 2, cos 2x will become minus 1. इसके बाद 3 पाई बाई 4 में वापस 0 आ जाएगा and then at pi it goes to 1 again. So cos 2x का नेचर क्या है? नेचर का मीनिंग है in this particular question we just want to analyze whether it is positive or negative. So 0 to pi by 4 के बीच में पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव. ठीक है. पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 भी नेगेटिव है, पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 4 भी नेगेटिव है, 3 पाई बाई 4 टू पाई cos 2x is positive. So now you have signs of all these three functions. ठीक है. अब आप गेस कर सकते हैं ये तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा. सो लेट अस एनालाइज दिस. सो लेट दिस बी 0, लेट दिस बी पाई. ये वाला मान लीजिए पाई बाई 2 है. दिस इज पाई बाई 4, दिस इज 3 पाई बाई 4. सो इन ईच ऑफ दिस इंटरवल्स लेट अस लुक एट द साइंस ऑफ ऑल द थ्री फंक्शंस. सो 0 टू पाई बाई 4 के बीच में साइन एक्स तो पॉजिटिव है. 0 टू पाई बाई 4 के बीच में cos x भी पॉजिटिव है, cos 2x भी पॉजिटिव है. सो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव
is positive. इसका मतलब 0 to pi by 4 के बीच में this expression is greater than 0. Now let us go to pi by 4 to pi by 2. So pi by 4 to pi by 2 के बीच में sin x पॉजिटिव है, cos x is also positive, but cos 2x जो है pi by 4 to pi by 2 के बीच में नेगेटिव. So plus into minus will give you a minus sign. So this is less than 0. Now let us go to pi by 2 to 3 pi by 4. Pi by 2 to 3 pi by 4, sin is positive, cos is negative, cos negative है, cos 2x is also negative. So plus into minus you get a positive answer. So this is greater than 0 in this interval. So last interval देखेंगे 3 pi by 4 to pi. Sin is positive again, cos is negative and cos 2x is positive. So plus into plus is negative which is less than 0. So आप देख सकते हैं कौन से इंटरवल्स में ए प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0. So आपको एक इंटरवल आया which is pi by 4 to pi by 2 which is the first option. So pi by 4 to pi by 2 के बीच में this product is less than 0. And again in the interval 3 pi by 4 to pi, 3 pi by 4 से लेके pi तक भी आपका expression is negative. And 0 to pi by 4 is not the right answer because 0 to pi by 4 में ये greater than 0 आ रहा है and pi by 2 to 3 pi by 4 के बीच में भी greater than 0. So option 1 and 2 are the right answers.